Hello everyone, welcome to the channel Algo Optimizer. So today we will be tackling LeetCode's daily challenge, which is nothing but lexicographical smallest string after applying operations. Okay, so let's have a quick understanding of the problem statement. So we are given a string s of even length and digit which would be containing the digits from 0 to 9, and we are also given with the two integers a and b. So we can apply either of the following operations any number of times and in any order. Okay, so first operation is what we can add or we have to add a this integer a to all the odd indices of s, and another operation is what we have to rotate s in the right direction, like this side. Suppose this is our element in the s, so we have to shift in this direction. Okay, and by what position? By b position. So we suppose b is equals to 3, then we have to shift this element by 3. So 1 2 and 3, so this would be here. So these are the two operations we have to perform, and we have to return the lexicographically smallest string. So let's first understand what does the this lexicographically mean. Okay. So see here, it is the definition is given here only. The string A is lexicographically smaller than string B if in the first position where A and B differ, string A is letter that appears earlier in the alphabet. Okay, suppose we are given a true string 2 1 3 4 5, and another one is 2 1 4 4 6. Okay, so we would first go we would first iterate the first element in both the string since it is the same. These both elements are same, so we would go next. Again, these both elements are same, so we would check for the next element. See here, these two is not equal. Okay, so you the smaller element whenever the first element where at the first position जो differ करता है वहाँ पे जो सबसे smallest comparative में ये जो small element है वो हमारी lexicographical string होगी इन दोनों में से. ठीक है, कंपैरिजन में lexicographical smallest string होगी हमारी ये वाली. इससे छोटी ये होगी, मतलब सिंपली मीनिंग ये होता है. सपोज ये एग्जांपल है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 2 2 3 6 whatever. Okay, so see here the first element, the very first element is getting differ. So this one, since the one is less than 2, so this string would be our lexicographically smaller than this string. Okay, so जहाँ पर भी पहली बार occurrence mismatch करती है वहाँ पे जो छोटी वैल्यूज लाइक छोटी पोजीशन जो कंसिडर करता है, जो होल्ड रखता है, जैसे यहाँ पे कि 3 जो है वो छोटी वैल्यू रखता है, यहाँ पे 4 से 3 is less than 4 and यहाँ पे 1 is less than 2. So this string and this string would be lexicographically smaller string than the other string. Okay, so this is the simplest explanation of lexicographically smallest string. And now let's understand the two operations. The first operation is we have to add the integer a to the odd indices of the s. So ठीक है, so suppose ये s हमारा दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6, 0th index 1th index 3 index 4 index 5 index. ओके, so हमको a जो इंटीजर है यहाँ पे सारी जगह पे ऐड करना है. ये हमारा हो गया पहला ऑपरेशन. और दूसरा ऑपरेशन हमको क्या करना है, b से शिफ्ट करना है राइट साइड. वी हैव टू शिफ्ट दिस स्ट्रिंग s to the right by b position. Suppose ये हमारा ये एलिमेंट यहाँ पे है और ये सेम है. So after the rotation, our string would be, suppose we are rotating it by 3 position. Okay, so what we have to shift it by 3 position. So this element would be where 1 2 3. Okay, so see, this would be our new string and this would be our this first element in this string, this element, and it is here in the second string after the shifting. Okay, so we have shifted the string by 3 position. So these two operations we can perform in any order in any number of times. So see, the most natural intuition with this question is what we have to just focus like just a natural thing कीजिए आप लोग. हमको ये दिया हुआ है कि we can either apply following two operations any number of time in any order. Okay, so see, जब भी हमको ऐसा दिया हुआ होता है कि either we can apply following operations and whatever operations, and see, and what is asked in the question, the we have to return the lexicographically smallest string we can obtain. So lexicographically is like what, the minimum, like it is not absolute, like it does not mean exactly minimum, but it is kind of minimum string now. We can consider it as a minimum string among all the generated strings. So see, whenever this kind of situation occurs, either of the following operations, like we have to perform all the following operations. Suppose 2 or 3 operations are given and we have to find the minimum or maximum out of all of it. So one approach can be always implemented, or one approach you have to always think about it. Okay, एक अप्रोच जो है रिकर्जन, उसके बारे में आपको सोचना ही सोचना है कि हम क्या करेंगे. सारी पॉसिबिलिटीज के लिए ये पहले एक स्ट्रिंग इसका ऑपरेशन लगा देंगे, इसका ऑपरेशन लगा देंगे, इसका ऑपरेशन लगा देंगे, फिर अगली बार जब करेंगे तब वापस इसका ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन, ऐसे सारे में हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज का वो करेंगे. ठीक है, रिकर्जन हम किस वे में यूज करेंगे, हम जितने भी पॉसिबल है
we will generate all the possible strings. Okay, remember all the possible strings. I like I came up with this approach only, like the most intuitive and most natural approach. So हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो है एक बार जनरेट करेंगे और एक जो ग्लोबल हम ट्रैक रखेंगे किसका, हम एक ट्रैक रखेंगे कि जो जनरेटेड स्ट्रिंग है उसमें से एक मिनिमम कौन सी है लेक्सिकोग्राफिकली. ओके एंड जो जब since we are using recursion, so there can be chance that we can face the state, like we can face the string which is already being generated. So if we go further then it would be like redundant. Suppose एक string जो है 1 2 3 4 ये एक string है, ठीक है. सो ये ऑलरेडी जनरेटेड है हमारे में और दूसरी बार को ऑपरेशन करते 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 हम यहाँ पे वापस आ गए 1 2 3 4. सो हमको पता ही है कि रिकर्जन में वापस सेम जो आएगी इसके पास जो कॉल होगी इसके लिए भी जो रिकर्जन कॉल होगा वो सेम होगा, तो एक्स्ट्रा टाइम ही जाएगा. तो हमको इसको सेव करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सारी की सारी जनरेटेड स्ट्रिंग्स है उसको हम क्या कर सकते हैं कहीं पे स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि यू वुड बी यूजिंग सेट, अनऑर्डर्ड सेट. Okay, unordered set for tracking the generated strings, all the generated strings you would be storing it in unordered set only. Okay, so let's just quickly build the program, like how the naturally we can create it. Okay, so just think it as a normal recursion problem only, since the constraints are not like too much. Constraint is only like n is less than equals to 100, so we can apply this approach. And मुझे नहीं लगता कि कोई नेचुरल इससे और लाइक अच्छी अप्रोच होगी भी, क्योंकि जो क्वेश्चन से हमको पता चला ना कि आइदर वी कैन अप्लाई टू ऑपरेशंस एंड एनी नंबर ऑफ टाइम इन एनी ऑर्डर. ओके, सी दिस. सो द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड जो आनी चाहिए वो रिकर्जन ही होनी चाहिए, ठीक है. सो सी फॉर एडिंग, लाइक हमको क्या करना है, ऐड करना है एंड द डिजिट पोस्ट 9 आर साइकिल बैक टू 0. इट सिंपली मॉड्यूलो 10 लेने को बोल रहे हैं हमको, ठीक है, और कुछ नहीं है. सो सी फॉर एडिंग व्हाट वी डू, वी वुड क्रिएट अ फंक्शन स्ट्रिंग add. Okay, so this and we will be taking string as and a integer. Okay, so see for all the odd indices we would be applying what, string of I equals to string of I, sorry, plus a. Like we have to change this character. Okay, s of I would be a character since the s is the string, so it would be a character. So we have to just add a to this and return, again we have to return the modified s. And in this what, shift, string shifting, okay, whatever, again we would be taking string as and whatever integer b we have to shift, we have to shift the string b by the b position. See here the question, it is given in the question only. हमको जो s जो है वो रोटेट करना है राइट साइड पे by b position. Okay, so what we would do, see I am explaining it here again. See, this is our string s and this is our first element, and see this is the 0th index, this is the nth index. Okay, and we have to shift our element by b. All the element would be shifting by b. So after the shifting, what our string would be like, see this element we have to like shift this by b position. So 0 would be in the bth place, but see here this n minus bth last, okay, would be at the last of the string. So for in the this part like we have to return what, our string would be like after the what transforming, after the transformation our string would be like 0 to n minus b, and here what, n minus b to n. This tree we have to concatenate this tree two strings. So we would returning what, we would be returning this s dot sub str 0 to what, n minus bth index, and again s dot sub str and to n minus b to n. Okay, so see this function would be what, our wait, just this function would be what, s dot sub str n minus b to n plus this. So we have directly rotated these strings. Okay, if you did not understand this part, let's just rewatch the video. Simply I did nothing. Okay, this is my string, this is 0 index, this is nth index, and I have to shift these all the element by b. So 0 would be somewhere here. So what would be our last element in this, so n minus bth element would be our last. See, this is the b, since this element would directly jump into this, so our 0 to
n minus b, this would be here, and this all part would be here. Like after the transformation, this part would be shifting here in the first place. So what it would be starting from here. So यहाँ से start होके यहाँ से end होगा. तो फर्स्ट अकरेंस जो हमारी होगी ये वाला एलिमेंट होगा. तो ये कौन सा एलिमेंट है? देखिए ये बी वाला इतना पोर्शन बी है और ये एन है, तो ये एन माइनस बी होगा. तो ये होगा एन माइनस बी से लेके एन तक. तो ये हमारी पूरी स्ट्रिंग बनेगी. तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, रिटर्न सब एस टी आर एन माइनस बी से एन, और यहाँ से एस ऑफ एस टी आर 0 to n माइनस बी. ओके, डायरेक्टली हमने ये कर दिया. फिर हम डायरेक्टली क्या कॉल करेंगे? रिकर्जन कॉल करेंगे. ठीक है, रिकर्जन में हम लेंगे स्ट्रिंग एस ए बी एंड एक स्टोर ले लेते, समझ लीजिए स्टोर करके क्या, जो कि होगा हमारा अनऑर्डर्ड सेट होगा. ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग्स को वो रखेगा. अभी हम चेक करेंगे कि चेक नहीं, वो एक बीच में कर लेंगे हम चेक. ठीक है, पहले भी कर सकते बाद में भी कर सकते. डायरेक्टली हम यहाँ पे ये ले लेंगे, स्ट्रिंग ए वुड बी व्हाट, ऐड फंक्शन जो कॉल कर देंगे हमको पूरा हमारा, और स्ट्रिंग बी वुड बी व्हाट, डायरेक्टली हम बी फंक्शन वो शिफ्ट वाला फंक्शन ऐड कर देंगे. ठीक है, और हम चेक करेंगे यहाँ पे कि इफ द स्टोर डजंट कंटेन this string, then only we would call the recursion function for next string a, and same for the second one. If store doesn't contain this string b, then only we will call the recursion for the second string. And here we would keep track of answer string, like the global string would be answer string, and हम track रखेंगे कि ये जो string है हमारी वो minimize रहे. तो answer would be what, minimum of answer and s. So see, let's go through the code. Then only you will be able to understand the approach. Okay, see here. Let's just understand the adding function. So what we are doing, see, we have initialized the I with 1. So 0, 1, 2, since it is a 0 indexed, so we have to go from the I equals to 1, because the first odd index in the array would be what, 1. So 1, then 3. So we that is why we are adding I plus equals to 2. Okay, and see what is we are doing here, we are directly convert this character into integer, and then we are adding a. So this part would change this s of I character to s of I integer. Okay, and then we are adding this integer a, and then we are taking modulo 10, since it is given in the question, like after 9 we have to again start from the 0, and after this is the shortcut, like instead of this we can directly apply this function also to string whatever integer you have generated. बट ये डायरेक्ट तरीका है प्लस 0. ठीक है, वापस स्ट्रिंग रिटर्न एस कर देंगे हम, ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग होगी जो हमारी नई वाली, सॉरी. एंड व्हाट वी आर डूइंग इन द शिफ्ट फंक्शन. देखिए जैसे मैंने कहा था यहाँ पे, तो सी अगर यहाँ पे जैसे ऐसा आ रहा है, हमको डायरेक्ट ये वाला सब स्ट्रिंग चाहिए, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट एन होता है, तो हमको सिर्फ यही वाला लिखने की जरूरत है, एन माइनस बी. ये वाला लिखने की हमको जरूरत नहीं है. ठीक है, लास्ट इंडेक्स, सिंस दैट इज वाई हियर एन माइनस बी इज रिटर्न ओनली. एंड यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि 0 to n माइनस बी, 0 to n माइनस बी, ये वाला इंडेक्स, ये वाला यहाँ पे आएगा 0 to n माइनस बी, एंड ये वाला यहाँ पे आएगा जो कि होगा n माइनस बी टू n. ये दोनों का कॉन्केटिनेशन होगा. ठीक है, सो ये हमारे दो फंक्शन हो गए. और अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ग्लोबलाइज्ड ए और बी ले लिए है, ताकि बार बार फंक्शन पे कॉल ना करना पड़े. थोड़ा मतलब अच्छा वो क्या बोलते हैं इसको, प्रिसाइज्ड वे में थोड़ा कम लिखना पड़े, बार बार थोड़ा क्लीन लगे. ठीक है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, एग्जैक्ट वो करने की जरूरत नहीं है. आप अपना अलग मेथड, जैसे यहाँ पे आप मैप भी यूज कर सकते हो, अनऑर्डर मैप की वैल्यू पे वुड बी स्ट्रिंग इंटीजर, व्हाटएवर यू कैन चेंजेस यू कैन डू. ओके, बाय योर ओन सेल्फ. सो थोड़ा बड़ा ट्राई कर सकते हो. फिर यहाँ पे आप डी एफ एस, इंस्टेड ऑफ डी एफ एस यू कैन गो विद बी एफ एस ऑल्सो. तो उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यू लेना पड़ेगा, एंड वही एक ट्रैक रखना पड़ेगा. फिर अगर ऑलरेडी द एलिमेंट अकर्स, लाइक दिस स्टोर जो हमने रखा है वहाँ पे अगर एलिमेंट ऑलरेडी आ गया है पहले से, तो आपको क्यू में पुश नहीं करना है, अदरवाइज यू हैव टू पुश द एलिमेंट इनटू द क्यू. ओके, सो दैट अप्रोच यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन सेल्फ. ओके, एक बार ट्राई कर लेना, इजी होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है, so let's go through this recursion function. So we will be first adding this string into the store, which is our unordered set, and we are keeping, see, we have globalized, like we have initialized this global variable answer, and we are keeping track of minimum of answer and s. So this would track our minimum string after all the generated strings. Okay, and see the first string a would be what, adding s a. So first string would be from this function, and second string would be from this function. So we are checking that whether string is already present in like our store unordered set or not. If the string is already present in this set, then we would not call the recursion function for this string. Otherwise, if it is not present, so if it is not present, then the store.count of a would be returning what, 0. So if 0 equals to 0, like it simply means the string is not present. So हम call करेंगे recursion function इसके लिए, और यहाँ पे again same इसके लिए call करेंगे, और रिटर्न में हम क्या कर देंगे, यही जो आंसर हमारा वो है वही रिटर्न कर देंगे. सी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है सब, फिर कॉल किया, डायरेक्ट रिटर्न कर दिया आंसर. ठीक है, सो इससे
डायरेक्टली है आप मतलब समझ सकते हो कि डायरेक्ट नेचुरल इंट्यूशन बिल्ड हो रही है रिकर्जन को। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यहाँ पे, तो समझिए कि अगर हम सारे ऐड अगर जनरेट करना चाहेंगे सारे के सारे ऐड वाले, तो हमको कितना टाइम लग जाएगा अप्रोक्सीमेट। सभी ऑड इंडेक्सेस को हम ऐड करेंगे, तो सपोज एक एक वैल्यू अगर 1 है और सबको ऐड करना है, तो 10n अप्रोक्स 10n लग जाएगा हमको। n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड शिफ्ट के लिए हमको क्या लगेगा, शिफ्ट के लिए तो हमेशा n लगेगा ही लगेगा, दोनों तो लगेंगे ही लगेंगे। तो मोटा मोटी आप अगर देखेंगे तो 10n² आसपास, मतलब ओ ऑफ n² की आपको कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है यहाँ पे, करीब करीब इतनी लग रही है, ठीक है। इतने मतलब इतने में कर सकते हो, जो दिस इज विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द गिवन इन द क्वेश्चन। एंड अगर समझिए आप बीएफएस से करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप समझिए कि क्यू एक बना लेंगे स्ट्रिंग्स की, ठीक है। क्यू बना लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एस वाले ऐड करेंगे, फिर अगेन दो फंक्शंस कॉल करेंगे इसके लिए, ऐड वाला और शिफ्ट वाला, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि ये जो रिटर्न स्ट्रिंग है, ये जो नई जनरेटर स्ट्रिंग है, ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम डालेंगे नहीं क्यू में, अगर सपोज कि प्रेजेंट नहीं है तो वी वुड बी पुशिंग दिस स्ट्रिंग इनटू क्यू, क्यू डॉट पुश दिस स्ट्रिंग, सेम विद दिस स्ट्रिंग। सो दोनों के लिए हम चेक करेंगे कि अगर प्रेजेंट है देन वी वुड बी पुशिंग दिस स्ट्रिंग्स इनटू द क्यू, अदरवाइज वी वुड नॉट, ओके। And after that again we will track answer string, like which would be what minimum of all the strings in this case only, like in this case also, okay। so इसमें भी सेम होगा, ये होगा आपका बीएफएस अप्रोच होगा, और जो हमने पहले दिखा था वो हमारा होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ओके। सो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ दोनों के लिए आप एक बार ट्राई कर देना, आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छा ही होगा, और मतलब अच्छी प्रैक्टिस होगी, दोनों का आपको इम्प्लीमेंटेशन करना एकदम फ्यूचर में सही रहेगा। आप जो प्रैक्टिस करोगे फर्दर क्वेश्चन ऐसे टाइप के, तो डायरेक्टली आपको हिट कर जाएगा। फर्स्ट नेचर आपको रिकर्जन के बारे में ही सोचना है, ठीक है। जैसे 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 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए आपके पास, तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि आइदर दिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम जो दिया हुआ है, तो सिंपली हमको सारे पॉसिबिलिटीज के से गो थ्रू करना है, तो हमको रिकर्जन का यूज ही करना पड़ेगा। सो रिकर्जन तो एक अप्रोच हो ही सकेगी, ठीक है। उसके बाद आप वो डीपी लगाएंगे और रिकर्जन, उसके बाद आप डीपी लगाएंगे, तो और फर्दर मतलब वो जो अप्रोच होगी उसमें हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो दिस इज द नेचुरल इंट्यूशन बिल्डिंग इन दिस क्वेश्चन, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई द बीएफएस मेथड बाय योर सेल्फ, ओके। सो हैप्पी कोडिंग, ओके, कोडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके।